Hello, my dear students. Welcome to the last session of this chapter, chapter number 10. We are dealing with cell cycle and two type of cell divisions, mitosis and meiosis. In last session, we have completed with meiosis 1. And today we are going to start with meiosis 2. So in meiosis 2, first stage will be prophase 2, then metaphase 2, anaphase 2, and then telophase 2. What happens during here? Let us see. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, and we have seen yesterday that interkinesis occurs, which is very short. Usually before the chromosomes have fully elongated. In contrast to meiosis 1, this resembles a normal mitosis. So all the events which occurred in mitosis we have learned earlier, they all are repeated here with the same process. Actually this is a part of meiosis, but still it can be related to, it can be comparable to mitosis events. So what happens in prophase of mitosis? Same thing will happen here in prophase 2. That is, first of all, the nuclear membrane, it will disappear and the chromosome again becomes compact. That means they become condensed. Then followed by metaphase 2. Here the chromosomes again align at equator. Now here homologous pairs are separated. So now all the chromosomes, they will be aligned at equatorial plate or metaphase plate. And the microtubules from the opposite poles of the spindle, they get attached to the kinetochores of sister chromatids. So same process which occurred in metaphase of mitosis. Next stage will be anaphase 2. It begins with the simultaneous splitting of centromere of each chromosome, which was holding the sister chromatids together, and then allow them to move towards their respective opposite poles due to stretching of spindle fibers. Then last phase is telophase 2. Here the mitosis ends with this phase, and in which the two group of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope. That means the nuclear membrane, it reappears, then the cytokinesis is followed by telophase 2, and then it will result into the formation of 4 haploid daughter cells, which are also known as gametes. If the meiosis, it is occurring in sperms, then they are occurring in testes, then sperms will be developed, and if it is occurring in ovary, then ova will be produced. So in this way, ova and sperms, they are known as gametes. They are always haploid, they have half the number of chromosomes. That is why meiosis is also known as reductional division. So ये डायग्राम हमने लास्ट सेशन में समझा था. Here the chiasmata is formed, synapsis is going on, और लाइट और डार्क कलर के जो क्रोमोसोम्स पेयरिंग में हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. और जहाँ जहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो रहा है वहाँ पे आप देखो जॉइंट आपको दिखा रहा है. इन टेट्राड कंडीशंस द chiasmata is shown, and this particular event is going on during pectine and diplotin. We are able to see either in the end of pectine or in the diplotin stage of prophase 1, and this is a very important event. In last session we have discussed all these things. Now let's discuss about all these events which are going in stage of meiosis 1. Yesterday also we have discussed. So in prophase 1, the exchanged part, they can be seen, but the homologous pairing is there. Then in metaphase 1, these homologous chromosomes, they are arranged in such a manner that one of the homologous pair of chromosome, it will move towards north pole, and other pair it will move towards south pole. That means homologous chromosomes are arranged on equatorial plate, and in anaphase 1 they get separated due to stretching of the spindle fibers. So in this way the nuclear membrane, nucleolus and other organelles, they will reappear, and two daughter cells, they are produced, but they are having n number of chromosomes. That means chromosome number, it becomes half. This is the importance of meiosis 1. Then after starts meiosis 2, which we have discussed today,
And here you can see that these chromosomes, because two daughter cells, they were produced in meiosis 1, so in both the further events they will go on. So in this way, metaphase 2, now here the sister chromatids, they will separate. Okay, so this is the difference between metaphase 1 and metaphase 2. In here, metaphase 2, sister chromatids, they will get arranged first of all in metaphase, and then in anaphase 2 they get separated towards the opposite poles. And in this way, in telophase 2, the 4 daughter cells, they are produced, and each will be having one of the chromatid of the chromosome. So you can see here the exchange part, they have come in some of the cells and some are totally non-exchanged part. So this is random process, but in total, after completion of meiosis, that means meiosis 1 and meiosis 2, from single parent cell 4 daughter cells, they are produced, and these 4 daughter cells, they are having haploid number of chromosome. And we all know that meiosis takes place in reproductive cells, and as I have told you right now, that sperms and ovary, in their cells the meiosis it occurs, and it is helpful in formation of the testes and ovaries, they are having meiosis, and sperm and ova development, they are due to these meiosis process. So always gametes are haploid, having half the number of chromosomes, and this is because of meiosis. Okay, so we can understand with the help of these diagrams. These both diagrams, they are important to draw in your classwork, stages of meiosis 1 and stages of meiosis 2. So here is the description of telophase 2 is given, though I have explained you earlier. So end phase of meiosis, and in which the two group of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope, it reappears, cytokinesis is there, and 4 tetrad are formed having haploid daughter cells, having haploid number of chromosomes. Now let us discuss the main event, that is significance of meiosis. One of the significance is this mechanism of meiosis by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation after generation in sexual reproduction. क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमेट्स में होंगे, उसके बाद गैमेट्स जब फ्यूजन करेंगे फिर से वो डिप्लॉयड नंबर मेंटेन हो जाएगा. तो सबसे पहले हाफ होना जरूरी है, एंड दैट इज डन बाय meiosis. Second importance is it also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to another. Variation कहाँ से आता है? Due to recombination, due to crossing over, which occur in prophase 1. So prophase 1 is an important event in meiosis, and that is why the variations they are created, the evolution it is possible. So third important point है, variations are very much important for the process of evolution. So evolution के लिए meiosis का एक बहुत बड़ा contribution है. Now students, let's discuss about certain exercises, certain questions which are important, एंड किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो भी मैंने बताया है, कैसे आप नोटबुक में लिखोगे, होमवर्क में लिखोगे वो भी मैंने बताया है. सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज ऑफ मियोसिस, और इसमें भी प्रोफेज 1 के बारे में लिखना है आपको. Then general difference between mitosis and amitosis. Though you have not seen about amitosis, but still इस difference के तरह से आप पहचान सकते हो. amitosis में आप देखो, it is a generally seen in microorganisms. जो lower organisms होते हैं like yeast, bacteria या protozoa, उसमें amitosis होता है. तो इसमें क्या होगा? chromosomes are distributed irregularly. जैसे यहाँ माइटोसिस में इक्वल डिवीजन होता है, यहाँ पे अमाइटोसिस में नहीं होगा. इवन द न्यू ऑर्गेनिजम्स दे आर फॉर्म्ड एंड सेल साइकिल इज नॉट सीन हियर. सो अनइक्वल डिवीजन होगा तो हम उसको अमाइटोसिस बोल सकते हैं.
यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में मियोसिस का मेटाफेज 1 एंड मियोसिस का ही मेटाफेज 2 उसके दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है। मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको स्पेसिफाई किया था, फिर से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मियोसिस 1 और उसके बाद मियोसिस 2, इस तरह से मैं पॉइंट लूँगी। हियर सेंट्रोमियर इज़ नॉट डिवाइडेड बट हियर सेंट्रोमियर डिवाइड्स। तो सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा? एक्चुअली हियर homologous chromosomes are aligned at equatorial plate, but here in meiosis 2 centromere of each chromosome is attached by spindle fibers. Then in 1 each centromere of pair remains in specific direction of cell pole and there it is arranged in one surface. And lastly chromosomes get separated. इसमें homologous chromosomes का separation होता है। meiosis 2 में single sister chromatids के बीच में separation होता है। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ओवरऑल मियोसिस में खाली एम्फेसिस आपको प्रोफेज 1 पे देना है, बट स्टिल ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन प्रोफेज 1, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इनको अगर आप मियोसिस में अच्छे से याद कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होते हैं। अदर इवेंट्स दे आर नोन, उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। Then here the explanation regarding some of the definition or explanation of the terms you are supposed to write, जो 1 मार्क में आ सकती हैं, like cell cycle, interphase, mitosis, meiosis का meaning जनरली ये तो नहीं पूछा जाता है बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। Then chiasmata, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। syncytium, ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इसके बारे में टर्म्स भी आपको मालूम होनी चाहिए और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। सो इन दिस वे वी विल सी दीज टॉपिक्स एंड यू आर सपोज टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर क्लास वर्क। सो दिस टॉपिक डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें जनरली हम देखते हैं माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, जहाँ पे ग्रोथ, सो दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। जहाँ ग्रोथ सेल्स हैं, जिसमें ग्रोथ होता रहता है, उनको हम बोलेंगे सोमैटिक सेल्स, या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं द सेक्स सेल्स, इन सेक्स सेल्स मियोसिस अकर्स, और इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं उन सबको हम सोमैटिक सेल्स बोलेंगे जिसमें माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। Then mitosis occurs in only 1 cycle but meiosis occurs in 2 cycles. सबसे पहले meiosis 1 होगा और उसके बाद meiosis 2 होगा। Then 4th point, here in mitosis 2 daughter cells they are formed, but in meiosis 4 daughter cells are formed. Then if we talk about chromosomal number, the number of chromosomes remains same in daughter cells as present in parent cell in mitosis, but in meiosis number of chromosomes they become half as they are present in parents. और लास्ट में in mitosis crossing over of genes does not take place. Prophase 1 is not complicated, complex. तो जितने भी पॉइंट्स हैं क्रॉसिंग ओवर या सिनेप्सिस से रिलेटेड वो सभी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। बट मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, सिनेप्सिस टेक्स प्लेस, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, देन रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म होते हैं, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, तो ये सारे इवेंट्स मियोसिस में होंगे। सो ऑल दीज पॉइंट्स दे आर डिफरेंशिएटिंग between mitosis and meiosis. This topic is very important. Now in last I have given you the exercise questions. मैंने टिक मार्क करके रखे हैं, उतने आपको सबसे पहले करने ही हैं, बाकी क्या आप बाद में सॉल्व करिए, पहले इनको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स हैं इसके, तो जनरली ये शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाएगा, जैसे कि एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर मैमेलियन सेल, then distinguish between cytokinesis and karyokinesis, like that. फिर आपके पास 5th, 6th, 7th, 8th, 11th एंड 12th, तो ये क्वेश्चंस भी आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, दे आर इम्पॉर्टेंट। और जितने भी मेन टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं वो मैं सबसे पहले टिक मार्क करके देती हूँ, और बाकी के क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे, बट सबसे पहले ये करेंगे आप, उसके बाद आपको बाकी के करने हैं, ठीक है। And with this we are completing this chapter here only in this session, and hope you are also doing
your work in time regularly. You are revising all these things, and be prepared for the coming unit test and complete your work in time, submit your work in time. Take care. Bye bye students.